evening. So welcome to Stylocraft hobby classes. In this video, see here, this is my calligraphy coat. So यहाँ मैंने जो बैकग्राउंड यूज़ किया है, जो बैकग्राउंड क्रिएट किया है, वो मैंने ब्रश पेन्स के साथ बनाया है. ओके, सो आज हम लोग ये वाला बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं. ओके, सो here I'm using brush pens, light green, light yellow and light brown, and white paper sheet, OHP sheet, spray bottle with water, and tissue paper. Okay, so let's get started. Okay, so first take your OHP sheet and your colors, and now I'm scratching my color here like this. उसको ऐसे पकड़ना है. ओके, और जो टिप है उसको ऐसे टिप के साथ स्क्रैच नहीं करेंगे, नहीं तो वो टिप जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा. तो ट्राई करना है उसको ऐसे, उसको होल्ड करके और लाइक दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट कलर. ऐसे कहीं कहीं आपको कहीं भी रैंडमली आप उसको स्क्रैच करना है. बस आपको अपने कलर ओवरलैप नहीं करेंगे यहाँ पे. ओके, लाइक दिस. ओके, नाउ टेक योर स्प्रे बॉटल एंड स्प्रे ऑल ओवर द शीट लाइक दिस on the sheet. Okay, like this. Now I'm taking my paper and just put the paper into our OHP sheet. Now flip it. Okay, and now spread the excess color like this with your fingers, just like this. Okay, and try to remove air bubbles. Sorry, कुछ कभी कभी एयर बबल्स बन जाते हैं, तो वो डिज़ाइन जब हम कुछ अच्छा सा डिज़ाइन नहीं होता है वो वहाँ पे लाइक दिस. ओके, नाउ आई एम रिमूविंग इट. Like this. Okay, now take your tissue paper and just tap here. ये जो एक्सेस आपको वाटर दिख रहा है, थोड़ा सा उसको रिमूव करेंगे. ओके, लाइक दिस. एंड सी हियर, ना अभी इसको हम लोग ड्राई होने देते हैं. Hi, now the next background is this one. Okay, ये मैंने अपने वाटर कलर्स के साथ मेरे पास ऐसे सिंपल वाटर कलर्स हैं कैमल के, उनके साथ क्रिएट किया हुआ है. तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं बनाना. ओके, सो फॉर दिस बैकग्राउंड we need watercolors, any kind of watercolors, brush pen, paint brush. So you need any kind of brush pen here. I'm taking my round brush. Iska number, I think this is 2 number brush. Now next some water
and white paper. Okay, so first take your white paper and here take some water and spray all over the paper. Spray all over the paper, and then take a little bit of blue color, light blue. I'm taking my light blue color here, and just do like this, rolling motion. Again taking some more some more color in my brush, and again doing the same here like this. तो बहुत easy है और बहुत satisfying भी है, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में. Like this. Okay, like this. Now I'm taking little bit of light green color. This one. Okay, and again repeat the same. Again I'm taking some green color, little bit of green color, and again doing the same procedure here. Okay, like this. Now I'm taking a little bit of yellow color here, light yellow. I'm taking my light yellow color and again doing the same, like this. Okay, like this. Now just wait, थोड़ा वेट करेंगे. अभी हम लोग इसको ड्राई होने देंगे. अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे ना देखो, यहाँ मैसी जैसा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो वाटर था वो थोड़ा कभी कभी फैल जाता है. बिकॉज़ अभी मैंने यहाँ पे 300 GSM पेपर यूज़ नहीं किया है. ये 120 GSM पेपर है, इसलिए ये थोड़ा सा नहीं, वो जो आपको दिख रहा है ये कि उसने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है अच्छे से, है ना. तो अगर आप ला सकते हो उस पेपर को, और अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोट है वो अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से क्रिएट हो, तो आप उसको 300 GSM पेपर को यूज़ करिए. ओके, सो आई एम वेटिंग कि ये जल्दी से ड्राई हो और मैं इसके ऊपर कोई कोट लिखूं.
है।